Hey skincare lover, welcome to this bonus episode of my channel Skintellect by Snehita. So did you know that one single ingredient जो आपके एक्ने को हील करने में हेल्प करता है, जो भी स्कल्प पे बिल्डअप है उसको क्लियर आउट करता है एंड स्मूथ करता है आपके जो भी बॉडी बम्प्स हैं, ऑल्सो हेल्प विथ योर रफ फिट. Yep, we are talking about salicylic acid. In this video, I am going to tell about everything you should know about salicylic acid, which is absolutely a skin multitasker, all simplified in biochemistry style. Hi everyone, I am Dr. Snehita, PhD in Medical Biochemistry. So if you want to deep dive and want to know everything about salicylic acid, their molecular structure, pH and their detailed mechanism, you can go and check out my episode 2 of Skincare Ingredients Simplified series. You can go and watch there. But right here I will keep it short, practical and easy, that you will exactly know how and where to use salicylic acid safely. Now moving forward to the what is salicylic acid. So salicylic acid is a beta hydroxy acid, or you can also call as BHA. It is a basically oil soluble. They are mainly in oil soluble form. So it makes a perfect to go deep inside your pores. So it's help in dissolving the excess oil, loosening the dead skin cells and also the calming inflammation. So basically it's your skin deep cleaner that is working beneath your skin surface. Now how it works, the simplified biochemistry. तो salicylic acid help करता है जो भी dead cell as a glued attached हैं एक दूसरे से, तो it help with salicylic acid आता है and it's help with जो भी attached हैं dead cell उसको वहाँ से break down करता है और पोर्स में ट्रैप्ड हमारे सीबम है उसको क्लियर आउट करता है एंड ऑल्सो हेल्प विथ रिड्यूसिंग द रेडनेस एंड स्वेलिंग. In short, you can say that salicylic helps in clear out the clog, also help in the calming the inflammation, also keep your skin smooth and balanced. So that's why it's help with your everything from your acne to dandruff to your body roughness. So starting from the head to toe uses, so I am using all these salicylic acid product because I have a dandruff, also I have a acne and my body roughness. I will tell you my own experience and how to use salicylic acid more effectively. So I am starting with the top, that is scalp. So salicylic acid helps with you removing the flakes and also the scalp buildup and your dandruff and removing your dead skin cells and oil from your scalp. So it also help your scalp active to work better. So ideal percent is about 1 to 2%. I have a very oily scalp and बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भी हैं, तो उसके लिए you can use any dandruff shampoo that is a Scalpe Pro और जो भी आपके लिए सूट होता है. And right now I'm using this L'Oreal का salicylic acid and hyaluronic acid. It contains this. So right now I'm using this and this all product are non-sponsored. जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं आपको वो दिखा रही हूँ. मैं इससे पहले भी बहुत सारे dandruff shampoo यूज़ किया हुआ है. I will share other shampoos also which I have used earlier. So you can buy if you want to. If you want me to tell the link, I can share in the description. Please let me know. So you can also go for the clarifying shampoo and you have to use 2 to 3 times a week. So second is face. On your face, salicylic is perfect for oily and acne prone skin. As you know that it unclogs the pore, reduce the blackhead and also control your oil production. So उसका ideal percentage will be, you can use around 0.5 to 2%. With a cleanser or toner from 0.5 to 2%, it will exfoliate gently without the irritation. And please do not pair with any strong acid or retinol at the same time if you're using this BHA. So again, this is a non-sponsored product. I'm using this all right now. This is my one of the favorite face wash, which is from Cosrx salicylic acid. ये तो मेरे पास हमेशा रहता है because I have very oily and acne prone skin. तो I use this. This is a very gentle on your skin. तो मुझे अच्छा लगता है Cosrx का. And for blackhead, I have this BHA blackhead powder from the again Cosrx. ये भी काफ़ी अच्छा हेल्प करता है जो भी आपके डेड स्किन है और जो भी ऑयल है फ्रॉम पोर्स से उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करता है. और इससे अगर इफ़ यू यूज़ फ्रॉम 2 to 3 टाइम्स अ वीक, अगर इसको आप यूज़ करते हो ब्लैक हेड टोनर, तो बहुत अच्छा वर्क करता है आपके स्किन में. एंड आई ऑल्सो यूज़ विद दिस 30% AHA 2% BHA है इसमें, मतलब 2% सैलिसिलिक एसिड है. तो एज आई हैव वेरी सेंसिटिव और एक्ने प्रॉन और ऑयली स्किन है, तो मैं इसको वीकली यूज़ नहीं करती हूँ. आई यूज़ वंस इन अ मंथ. तो
अगर इसमें BHA है तो ये हेल्प करेगा आपका जो भी एक्ने है उसको काम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस और स्वेलिंग को भी रिड्यूस करता है काफ़ी। नाउ थर्ड इज़ बॉडी। सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी टू। So it help with your bag acne, keratosis pilaris. It means if you have your bumpy skin, or it is also called the chicken skin, and ingrown hairs की वजह से भी जो bumps cause हो जाते हैं, तो it will help in all this thing. And you can go for any body washes which contain the salicylic acid or body lotion with 1 to 2% of salicylic acid. So it's basically help with your smooth the skin texture and unclog your pores. So it is useful for your shoulder, arms, back acne and all of this thing. Again, this is a non-sponsored product, and now you can see this that I'm a big fan of salicylic acid. So right now I'm using this body wash that contain the 1% salicylic acid. I'm just a big fan of this. मैंने salicylic acid के सारे ही body wash use कर रखे हैं. I will just give you all the product details जो भी है मैंने use किए हुए हैं. That वर्क परफेक्टली। जो भी को बॉडी वॉश अफोर्डेबल आपके बजट में आता है, यू कैन गो एंड बाय दैट। जो भी फ्लिपकार्ट अमेजोन में जस्ट गो एंड टाइप थी सैलिसिलिक एसिड का बॉडी वॉश, सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश। तो जो भी आपके बजट में आते हैं, बहुत सारे ब्रांड है, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दैम। एंड ऑल्सो आई हैव जस्ट टेकन दिस सैंडीवेंस का बॉडी वॉश बिकॉज इट हैज़ रिटेन दैट इट कंटेन दिस सैलिसिलिक एसिड इन्फ्यूज्ड विथ बिट्स। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ था सैलिसिलिक एसिड का। सो आई हैव बाय दिस ऑल्सो। पता नहीं इसमें कितना परसेंट है, इट होप यू वर्क करता होगा। मुझे इसका इतना ज़्यादा कुछ लगा नहीं बिकॉज इट इज़ नॉट रिटेन एनी परसेंटेज कि कितना है, हो सकता है बहुत ही कम अमाउंट में हो, बट यू कैन गो फॉर दिस। आई हैव ऑल्सो यूज केमिस्ट एंड प्ले, बहुत ही अच्छा है वो अगर आप यूज़ करोगे उसका। तो और बॉडी लोशन आई एम यूजिंग दिस AHA BHA फ्रॉम WishCare। तो दिस इज़ वेरी गुड इफ़ यू हैव योर अनइवन स्किन टोन है, आपकी बहुत बम्पी स्किन है, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर दैट। आप इसको प्लीज़ ले सकते हैं, यू कैन यूज़ इट इन बोथ AHA and BHA. You can go for this, otherwise I will just give more product details. You can go for any of them जो भी आपके बजट को सूट करता हो। So fourth one is for hand and feet. So salicylic is also beneficial for your feet and hand. अगर आपके बहुत ज़्यादा रफ पाम है और you have a cracked heel, so you have to use the salicylic acid more in percentage, like 4 to 6% salicylic acid cream on your cracked heel, या आप as a socks use कर सकते हैं for your heel, also for your palm. So it will help with your smooth palm and baby soft foot. Why you should give it a try? So salicylic acid isn't just about the one acne ingredient, it's a science-backed oil balancing. It's truly one ingredient that supports your whole skin renewal process. So that's everything you should know about salicylic acid. Simple, science-based and practical. Start slow, listen to your skin, and don't forget to apply sunscreen. For a deeper dive, don't forget to check out my episode 2 of Skincare Ingredients Simplified and to know what is the biochemistry behind it. So this is Snehita bringing your skincare that is science-backed and simplified. Only on Skintellect by Snehita. So don't forget to share, subscribe and like my channel. So see you in the next episode. Till then, bye bye, take care and please follow for more.